अरे स्क्रिप्ट तो पढ़ ले भाई. मैंने कहा मैं कर रहा हूँ. Only time that Rohit bhai screamed or shouted on the set was because we were having too much fun. I went and hugged everybody and I said I'm going to miss you guys, and I actually missed them. And then he used to tell me also, he said यार अपन 20 साल में कुछ कर नहीं पाए because it's the Rohit Shetty Copverse and we're all going to be just swimming in it, I think. Starting the 19th on Amazon Prime Video, and of course Vivek Oberoi हमारे साथ है. Thank you so much for joining me. Always and a welcome pleasure. back to Fever. Always a pleasure. I look forward to talking to you. Thank you so You're much. so full of energy, man. Thank you, thank you. मुझे तो हमारा last interview याद है where we celebrated your wonderful time in the industry, and I'm so glad. उस वक्त आप ज़्यादा बोल नहीं पाए, लेकिन finally here we are. You know, you have this massive show. Right, I remember that. You asked me about IPF. You told me about Indian police. I was like, हाँ, अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अभी भी ज़्यादा बदला नहीं है. वो तो है. ये 19 तारीख तक ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये कैसे कर लेते 10 पन्नों का कॉन्ट्रैक्ट है अमेज़न का. NDA जिसे कहते हैं, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट. एक तरफ वो साइन करते हैं, दूसरी तरफ बोलने को बोलते हैं. So it's a tough one. It's like being married. Absolutely. You know, I asked Shilpa the same question. मैंने कहा, when you got that call saying you want to be part of this, you know, Copverse, how excited were you? Take me back to that day. You know, क्या हुआ था उस दिन? So look, brief history is that Rohit bhai and I have been friends now almost 20 years, right? And there's a deep sense of love and mutual respect. I remember he was telling me that it was during company that Ajay bhai mentioned about me and said कि यार ये लड़का है, आके देख ले. And there was a script where they were planning me, Ajay bhai and Rohit bhai to direct. And that didn't happen. I think I didn't even know that it was supposed to happen, and it didn't happen. होने वाला था. जी. And then funnily enough, we used to always meet at police functions. जी हाँ. तो मैं पुलिस वालों के लिए ऑर्गेनाइज करता हूँ उनके परिवारों के लिए, उनके लिए कैंसर की फ्री टेस्टिंग, राइट, ताकि ओरल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर इन सब सेहत उनकी बनी रहे. एंड डी एडिक्शन कैंपेन्स. फर्स्ट पर्सन आई ऑलवेज कॉल इज रोहित भाई. आई वाज लाइक आप आ सकते हो, आप आओगे तो अच्छा रहेगा, सपोर्ट मिलेगा, आई विल बी देयर एंड ही विल बी देयर. जबान के एकदम पक्के हैं, अगर उन्होंने बोल दिया बाद में बहाना वाना टालना वालना कुछ नहीं, ही इज ऑलवेज देयर. सो वहाँ हमेशा मिलते थे और बातें होती थी. कुछ करते हैं, हाँ कुछ करते हैं, कुछ होगा तो बताऊंगा, हाँ ठीक है आप बता देना. इट विल ऑलवेज बी लाइक दैट. एंड ही यूज्ड टू टेल मी आल्सो, ही सेड यार अपन 20 साल में कुछ कर नहीं पाए, बिकॉज एवरी टाइम आई थिंक ऑफ समथिंग आई थिंक यार एज एन एक्टर whatever is of your caliber, that role, I don't want to offer you anything less. बिल्कुल. So I said that's very sweet of you, I respect that. फिर एक दिन उनका फोन आया, आ जाओ ऑफिस. तो मैं गया ऑफिस. उन्होंने कहा स्क्रिप्ट है, विक्रम बख्शी. The day I started writing it, this character, you're the first person I thought of. Wow. तो मैं वहीं पिघल गया. हाँ. मैंने कहा हाँ. खत्म. Sagittarians को बस इतना बोल दो. इतनी बड़ी बात अगर किसी ने कह दिया. And the director I love and respect both as a person and as a director. तो मैंने कहा मैं कर रहा हूँ. अरे स्क्रिप्ट तो पढ़ ले भाई. मैंने कहा मैं कर रहा हूँ. मुझे सिर्फ आना है सेट पर. लेकिन हम जो स्केल सोचते हैं रोहित शेट्टी के यूनिवर्स के साथ, उस स्केल में when you go in, I think it could still be intimidating. ऐसा कभी हुआ क्या? From a perspective कि first day of shoot से पहले अगर बटरफ्लाइज नहीं आए ना, तो फिर कुछ गड़बड़ है. Exactly. मतलब अंदर ही अंदर दिल डिसइंटरेस्टेड है. आए थे ना? 100%. Okay. कैसे करना है, क्या करना है, वो अंदर चाहिए दैट एनर्जी की. कल ये करेंगे, ओह कभी कभी रात में ऐसे पलटता हूँ मैं. आई नेवर स्लीप वेल बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ शूट एंड आई लव इट बिकॉज इट टेल्स मी हाउ एक्साइटेड आई स्टिल एम विद द रोल. So that was super exciting. But what I didn't know, what I didn't prepare for was कि इतना मजा आएगा set पे, because this is the first time I've worked with him, ना. Yeah. His working style, that team, oh God bless his team. What an amazing team of people. They're sweethearts. उनके साथ में हमेशा हम पढ़ते थे ना रोहित शेट्टी एंड टीम. पर वो टीम होती क्या है और कितना मजा आता है उनके साथ में, वो तो काम करके ही पता चला. It was super, so emotional at the end of it. जब लास्ट डे पे सब ताली वाली बजा रहे थे, it's a rap for Vivek sir's character, ये वो सब. I went and hugged everybody and I said I'm going to miss you guys, and I actually missed them. I actually missed working with them. Withdrawal symptoms हो रहे थे मुझे. That's amazing. I always thought that you were, as an actor, slightly ahead of time.
Okay, so now I'm very curious to know because इस age of content में जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ पर हर कोई मतलब it's such a pleasure to watch everyone bring their A game and OTT आपके लिए करता है. Have you turned around and said, यार, after these many years, there is something that I have learned or I'm excited to perform, you know, differently this time. I want to know as an actor ये क्या process रहता है आपके लिए? With the exception of those films and roles that I sold my soul and did for the wrong reasons, money, lobby, इसको खुश करने के लिए, all that drama that used to go back in the day in my career. With the exception of those films, the films I did because I was excited as an actor, the films that made me feel क्या रोल है यार, इसमें बहुत मजा आएगा. Those films, every single one of them, I felt growth because the way I've been with my directors is I've never waited for them to tell me, can you try something different that's on the page. I've always been, because I digested so much and I interpreted. I was just meeting my mentor, Ramuji. After a few years I met him, 2-3 years, because he's been in Hyderabad. And he was reminding me of a sequence in Rakta Charitra, which is a 2-page scene where I take a pratigya of sorts, right? वो कि मैं बदला लूँगा. अब उसमें 6-7 कैरेक्टर थे, मुझे इधर से उधर चलना था, उन्होंने इस तरह से रिवर्क किया था, फिर कैमरा ऐसे फॉलो, यू नो हाउ रामू जी के जैसे ना, कैमरा इधर से आएगा, फिर इधर से पकड़ेगा, उधर से पकड़ेगा. पर उस सीन की एक ग्रेविटी थी, एक बर्निंग सीदिंग रेज और इंटेंसिटी थी रिवेंज की. तो एक सिकल पड़ा हुआ था, सिकल को मैंने उठाया और मैं ऐसे बैठ गया एक ही जगह पे, कैमरा यहाँ है और मैं ऐसे ही बैठ के सिर्फ उस सिकल को जमीन में मारने लग गया इस तरह से. And I just started performing. और आंखों में से आंसू भी निकल रहे हैं, गुस्सा भी निकल रहा है, उबाल भी निकल रहा है. And Ramuji just started watching it and he said, "This is what I want. I got it. I don't want to shoot anything else. यही चाहिए मुझे." So it always thinks. I've done this with Mani sir, where हम shooting कर रहे थे युवा की, and he said कि यार ये तो बहुत अच्छा लगा take. He used to always do this with me. He used to say, "I love this take. This is good. Do you want to do something of your own? No briefing from me." So I used to always come and say, "Okay." And after some time I figured कि ये पूछेंगे, कुछ तैयार करके रख ले बेटा, तैयार करके आ जाओ, है ना? So I तो रोहित के लिए क्या किया, कुछ किया क्या? रोहित के साथ मेरा 3rd day of shoot पे एक बहुत अनोखा सा एक्सपीरियंस रहा. पेचीदा सा सीन था, थोड़ा सा ग्राफ परफॉर्मेंस पीस था, तो वो किया एंड पूरी इंटेंसिटी में परफॉर्मेंस में कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, और कट ही नहीं बोल रहा है कोई. तो मैं परफॉर्मेंस खत्म हो गया है, सीन कैरी ऑन करते जा रहा हूँ, कट ही नहीं बोल रहा है. फिर थोड़े टाइम बाद मैंने ऐसे घूम के आई लुक टुवर्ड्स माय डायरेक्टर एंड रोहित भाई वाज देयर जस्ट विद दिस स्माइल, दिस प्राउड ब्यूटीफुल स्माइल. एंड देन ही टुक दैट माइक, इट टच्ड माय हार्ट. ही टुक दैट माइक इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, हिज होल टीम. ही सेड, राशन कार्ड बन गया है तेरा. Yes, boss. Yeah. He told me, this is why I wrote this thinking of you. I love you as an actor. It felt so good. I had such a great time talking to Shilpa as well, and I just feel that she's a rock star, man. I love her. हाँ, मतलब ये जो है, ये जो फिल्में देखते हैं ना 20 सालों से, we are like Vivek Oberoi, oh Shilpa Shetty, this is going to be fun. But that is something about a set like this that I think is so special. लेकिन serious चीजें चल रही है इस शो में. So how do you snap in and out? I think the only time that Rohit bhai screamed or shouted on the set was because we were having too much fun. Us actors, me, Shilpa, I think Shweta, Sid, हम लोग मस्ती करते. Sid बहुत बदमाश है, वो इतना पोकर फेस्ड है ना, वो टिपिकल दिल्ली का लौंडा ही है वो. She said the exact same thing. Can we just cut to that, please? हम तो बहुत प्यार करते हैं यार सिद्धार्थ मल्होत्रा से. आपको बहुत प्यार हो गया उनसे? क्यों ना हो यार प्यार उससे, इतना गुड लुकिंग बंदा है, दिल्ली का लौंडा. वो ये क्या मुंबई के हम लोग खड़े हैं एकदम सीक्वेंस सीरियस कुछ चल रहा है, वहाँ सब शॉट चल रहा है, उसके कान में कुछ ऐसे बोल देगा फनी सी बात और फिर खुद पोकर फेस हो. मेरे को हंसी, मैं कहता है यार मरवाएगा तू, क्या कर रहा है यार, क्यों डांट पड़वाएगा. लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट में व्हाट डज इट डू फॉर एन एक्टर? यू नो, वक्त मिलता है ज्यादा. यू थिंक दैट हैज बीन एन एडवांटेज? प्रोज एंड कॉन्स दोनों. प्रोज ये है कि वक्त मिलता है ज़्यादा,
बारीक बारीक काम कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, सेकेंड एपिसोड में ये कर रहा हूँ, फोर्थ में ये करूँगा, फिफ्थ में ये करूँगा, आई प्ले इट लाइक दिस, बिकॉज आपको 2-2.5 घंटे के अंदर ग्राफ नहीं समेटना है, आपके पास 8 घंटे हैं, 4 times the amount of time. लेकिन difficult part, not a con, but the challenge. Inside Edge 1 ले लो, first season's entire graph was so dark, so shock and awe, so much power, make you hate somebody having that kind of chokehold on the rest of the characters. Second season में उल्टा है. Now you have to make them feel बेचारा. ये rise आएगा, इसका he'll come back, he'll rise like a phoenix. ये he'll come back to old his position. इसका एक emotional context है. So the first season was all about कि दुनिया को hate करवाओ. और second season अब जीतो उनका दिल. Correct. So those switches between the keeping the framework of character trait same, मतलब ढांचा वही है, but emotional journey जो है ना वो बहुत challenging है, उसका मजा भी आता है to be honest. बहुत मजा आता है. I mean, for me, it's just about more Vivek Oberoi, please, on our screens. I love you. And you'll always be, you know, the boy who rode with that headphones on Marine Drive. You know, that whole generation. I mean, Saathiya love going to you even today. Thank you. Yeah, like I think, do you miss that? Do you want to be? I'm do you want to be actually like? actively looking for a script है ना? because Aparna has been killing me. She's been like, it's been 2.5 years I've been telling you, let's do something, you know, in the romantic space. Let's do something that's today, honest, real, age appropriate. So I'm actually looking for a script. So in case you're writing. Yeah. I think I just have to manifest it. और manifestation की बात जो आपको कोई नहीं बताता है is that manifestation actually means scratch it and say work. Everyone thinks it's manifestation, लेकिन काम होता है, hard work होता है. Do you agree? It's not just manifestation, it's mehnati festation. This is why you should be on the radio with me every day. You know, you're the best interview ever, right? Always. Always. Like, it is amazing. I have interviewed him for, you know, many years now, but I always leave with a feeling that you're as interested in talking to me as much as I am in But talking you to you. evoke that, you're so good. और Fever FM पर अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए thank you so much for watching. See you guys. Bye-bye.